my dear listeners, welcome back to Padhai Pe Charcha. I know it has been a long gap, but we are back with a new chapter on parts of sentence. In our previous classes, we have learned about types of sentence. Now, we will move forward with parts of sentence. So, before starting, let me remind you, we here at Padhai Pe Charcha aim to bring best to you in a simple way, ताकि आप लोग को समझने में और मज़ा आए, पढ़ने में और मज़ा आए, और पढ़ाई को और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं वो हम इनकलकेट करना चाहते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट. सो सेंटेंस के टाइप्स तो हम जान लिए. अब बारी है एक सेंटेंस में क्या क्या होता है. सेंटेंस के बारे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, कमांड सेंटेंस होता है, वो सब तो हमने पढ़ लिया. अब एक जब सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, उस सेंटेंस में क्या क्या आना चाहिए ताकि एक सेंटेंस परफेक्ट सेंटेंस कहलाए. अ सेंटेंस हैज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. दैट इज़ वेरी कॉमन, वी ऑल नो दैट. बट उसके साथ सेंटेंस ऑल्सो शुड हैव क्लॉज एंड फ्रेज. क्लॉज और फ्रेज क्या होता है, वी विल रीड इन द चैप्टर. फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट. ओके, सो लेट अस नो व्हाट इज द सब्जेक्ट. व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? जब कोई वर्ड, कोई एक्शन शो करता है, हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if I write Ram is playing, this is a simple sentence. You can say Ram. राम क्या है? वो एक्शन शो कर रहा है. इसमें एक्शन क्या शो कर रहा है? राम शो कर रहा है एक्शन, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. सो दिस सेंटेंस विल नॉट हैव डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और फ्रेज, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक्शन क्या शो कर रहा है? राम. कौन शो कर रहा है? राम. तो एक्शन वर्ड क्या हो गया? राम. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. बट इफ आई राइट अ सेंटेंस a beautiful girl is sitting by the river. So इसमें डिटरमाइनर क्या हो गया? डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर वो वर्ड्स होता है जो सेंटेंस को डिटरमाइन करता है, उस सेंटेंस को एक मीनिंग देता है. इस इन दिस सेंटेंस इफ वी सी व्हाट इज डिटरमाइनिंग द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या हो गया इसमें? ब्यूटीफुल. द वर्ड ब्यूटीफुल. व्हाई? बिकॉज द वर्ड, okay, adjective is always used before a noun. noun के पहले हमेशा adjective लगता है. तो यहाँ इस in this sentence a beautiful girl is sitting by the river. what is a noun here? Girl, because noun is always the girl is a noun. So what is the adjective of a girl? adjective क्या होता है? जब हम किसी की विशेषता बताते हैं. when we beautify a sentence in a way, we can say कि जब हम कोई noun का कोई विशेषण, मतलब उसकी कोई क्वालिटी बताते हैं,
तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे गर्ल का क्वालिटी क्या बता रहा है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल इज व्हाट? ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। नाउ एडजेक्टिव को जो डिटरमाइन करता है, एडजेक्टिव को जो एक मीनिंग देता है, वो होता है डिटरमाइनर। तो यहाँ पे कितनी गर्ल्स का बात हो रहा है? वन। वी आर यूजिंग गर्ल, तो मतलब एक ही जन का बात हो रहा है। तो अ विल बिकम डिटरमाइनर बिकॉज वो अ क्या है? अ इज डिटरमाइनिंग कि देयर इज ओनली वन गर्ल सिटिंग। नाउ व्हाट इज phrase here? Now we come to adjective phrase. तो adjective phrase क्या है? adjective phrase यहाँ पे हो गया is sitting by, is sitting by, is sitting by। ये क्या हो गया? this is a phrase। phrase के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, जिससे phrase will become more clear to you कि what is a phrase। so this is what a subject is। now let us read about clause, predicate। now come to predicate। so अगर कोई, अगर in a sentence if the action doing word, मतलब जो action, जो चीज़ एक्शन कर रहा है, अगर वो सब्जेक्ट हुआ तो व्हाट विल बी द प्रेडिकेट? द प्रेडिकेट क्या हो गया? प्रेडिकेट वो हो गया जो उस एक्शन, जो वो जो एक्शन है उसको जस्टिफाई कर रहा है। लाइक हियर इट इज रिटन, द प्रेडिकेट is of the sentence consists of word that express the action done by the subject or say something else about the subject। means कि जो एक्शन, जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसके बारे में जो चीज़ बता रहा है, that is a predicate। like in the first example that I have given was Ram is playing। okay, so Ram is a subject। why? because Ram is doing an action। action कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। but राम क्या कर रहा है? what action is he doing? playing। playing will become predicate। सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो गया? सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है और प्रेडिकेट वो होता है कि जो सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है जब वो बताया जाता है, वो होता है प्रेडिकेट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। So in the first sentence, Sam looked tired। this is a simple sentence। इसमें कोई भी verb, कोई भी determiner या किसी भी तरीके का phrase नहीं आता है। so this is a simple sentence। so here Sam here what? Sam is a subject because Sam is doing an action। what type of action is he showing? मतलब किस तरह का वो action show कर रहा है? looked tired। वो Sam क्या था? he looked tired। so this will become a predicate। in the next sentence, to forget is divine। to forget is divine। This is known as infinitive। this sentence is known as infinitive। why infinitive? because to be divine मतलब
स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट मेजर्ड. हम वो मेजर नहीं कर सकते हैं कि हाउ मच स्पिरिचुअल अ पर्सन इज़. वो मेजरेबल नहीं है, इसीलिए अब इसे इन्फिनेटिव कहते हैं. टू फॉरगेट इज़ डिवाइन. दिस इज़ ऑल्सो अ सिंपल सेंटेंस. इसमें भी किसी तरह का कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब, कोई फ्रेज नहीं है. दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस. So in this sentence, what will be the subject and what will be the predicate? To forget will become a subject and is divine will become a predicate. Why? Like in the starting I said it is an infinitive. मतलब कि इसमें कोई भी measurable नहीं है कि क्या कितना है, वो कोई measure नहीं कर सकते. Also इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू फील. डिविनिटी क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी. वो हम फील करते हैं, तो हम कितना भूल सकते हैं, दैट इज़ नॉट मेजर्ड. हम क्या भूल रहे किसी के बारे में, दैट कैंट बी मेजर्ड. तो इसीलिए टू फॉरगेट विल बिकम अ सब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट, in the first sentence, Sam was subject, looked tired was predicate. Now next, there are 45 boys in the class. Now this is something different. Why? Because in this sentence you can see there is a verb in it. Okay, so in this sentence you can see the sentence like there are 45 boys in the class. So which sentence is showing in action? Action क्या show कर रहा है? If I see are 45 boys in the class, so we can say this is what? This is showing कि कितना क्या है. So we can say that this sentence is showing what? The sentence is showing a predicate nature. Why? Because if you read are 45 boys in the class, वो क्या हो गया? वो ये दिखा रहा है कि वो एक्शन शो कर रहा है कि उस वर्ड कोई एक्शन का जो रिज़ल्ट है, एक्शन का रिज़ल्ट शो कर रहा है, तो हम इसको एक प्रेडिकेट मान सकते हैं. सो इफ़ आर 45 बॉयज़ इन द क्लास एक एक्शन शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर को सब्जेक्ट होना ही पड़ेगा. बिकॉज व्हाट एक्शन क्या शो कर रहा है, तो दैट कैन ओनली बी देयर. So in the next sentence we see it was very hot. Again, if I see was very hot yesterday, ये सेंटेंस अगर हम देखें तो क्या ये प्रेडिकेट नेचर शो कर रहा है? Is this sentence showing a predicate nature? Obviously yes. Why? Because was very hot yesterday ये रिज़ल्ट शो कर रहा है. कैसा था, इसका क्या था, कैसा था, वो आंसर मिल रहा है हमें. वॉट, वाई. रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास आई सेड हु, वॉट, वाई, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ WH. तो उसका आंसर हमें मिल रहा है. अगर हमें हमारा WH क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो दैट इज़ अ प्रेडिकेट. तो यहाँ पे WH का आंसर मिल रहा है, सो इट विल बिकम अ सब्जेक्ट. दिस इज़ हाउ यू डिटरमाइन व्हाट इज subject and what is predicate. Now smoking is harmful. Again, if you look,
is harmful. If you look at is harmful, is it showing an answer to your WH question? Yes. So it is a predicate. So what is a subject? Smoking. The moon rises. What is showing an answer? In this you answer the question of WH. क्या आंसर कर रहा है? Yes, moon rises. That is a predicate. The is a subject. Okay. Sorry. One mistake. Not the. In this sentence, rises is a predicate. The is a. If you see what, अगर हम WH question क्या कर रहे हैं, what rise? What does a moon do? Rises. So वो एक predicate हो गया. The will become a subject. Moon is what? Moon is here a main verb. Moon is acting as a main verb. Now I am explaining you this also. How? If you question like, what does moon do? It rises. What rises? The moon. तो the moon नहीं हो सकता है. Moon has to be the main verb, क्योंकि question का आंसर अगर हम question कर रहे हैं, I am questioning, तो उसका आंसर तो rises आ रहा है, बट क्वेश्चन में भी मून आ रहा है, आंसर में भी मून आ रहा है, तो मून इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब. नेक्स्ट इज द कनिंग क्रो फ्लू. द कनिंग क्रो फ्लू. Here also you can see what flew. Crow flew. Crow is what? How was the crow cunning? हम कैसे भी क्वेश्चन पूछ रहे तो क्रो वहाँ आ रहा है, तो क्रो हैज़ टू बी अ मेन वर्ड. फ्लू क्या हो जाएगा? फ्लू विल बिकम अ प्रेडिकेट. द इज हियर अ डिटरमाइनर, क्योंकि कनिंग अगर मेन वर्ब क्रो है तो क्रो को डिटरमाइन क्या करता है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डिटरमाइन कर दो. कनिंग हैज़ टू बी एन एडजेक्टिव एंड द और एडजेक्टिव को क्या डिटरमाइन करता है? डिटरमाइनर. द इज अ डिटरमाइनर. सिमिलरली द ओल्ड लेडी विथ अ स्टिक फेल डाउन. सो हु फेल डाउन? ओल्ड लेडी विथ अ स्टिक. Fell down is here a predicate. Now if you see with a stick, with a stick क्या हम लोग इसको एक सेंटेंस मान सकते हैं? Yes, we can. So this is a phrase. Lady is a noun. Old is an adjective and the is a determiner. Like further you will read about phrase and clause. So ये phrase और clause का जो confusion है वो clear हो जाएगा. Now phrase. What is a phrase? Phrase sentence का वो part होता है जो ऐसे तो complete होता है, but phrase is that part of sentence which is although a sentence but उसमें कोई complete meaning नहीं होता है.
लाइक एट नाइट, जॉयज एंड सॉरोज, अक्रॉस द रिवर्स। ये क्या है? एक सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस इज व्हाट? सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। ये डिफरेंट वर्ड का कॉम्बिनेशन तो है, बट क्या ये एक सेंटेंस है? नो, दिस इज़ नॉट। सो दिस इज़ अ फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है जो ऐसे तो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, बट इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंटेंस, क्योंकि दीज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, बट इसमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है जब तक वी डू नॉट ऐड सर्टेन वर्ड्स टू इट, तो वो इनकम्प्लीट होता है। इसीलिए टू कंप्लीट अ फ्रेज वी नीड अ क्लॉज। फ्रेज को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्लॉज। सो क्लॉज इज़ व्हाट? क्लॉज, अगर फ्रेज को क्लॉज कंप्लीट कर तो क्लॉज का क्या होता है? क्लॉज इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। लाइक हियर आई हैव रिटन हाँ, एट दैट डे शी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। कैन आई combine these two sentences? Yes. So she has gone for a walk. तो इसका फ्रेज क्या हो गया? एट दैट डे, देयर इज माई होम, वेयर इज माई होम, अक्रॉस द रिवर। सो एक फ्रेज को एक क्लॉज कंप्लीट करता है, बट क्लॉज हैज़ अ मीनिंग। क्लॉज के पास मीनिंग होता है। क्लॉज इज although an incomplete sentence but has a complete meaning. That is a clause. Also, clause can be a sentence and with a combination of two clause. In the first sentence, I know Mr. Tiwari who is an engineer. तो I know Mr. Tiwari तो एक complete sentence है, who is an engineer भी एक complete sentence है. So these two are clauses. ये दोनों ही clause है. सो क्लॉज क्या है? क्लॉज दो क्लॉज को मिला के भी एक सेंटेंस बन सकता है, बट दो फ्रेज को मिला के एक सेंटेंस कभी नहीं बनेगा, बिकॉज टू फ्रेज विल मेक एन इनकम्प्लीट मीनिंग बट टू क्लॉज विल मेक अ कंप्लीट मीनिंग. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज के पास खुद एक मीनिंग होता है. सी, अ क्लॉज इज सेम एज अ फ्रेज, बट क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग होता है. क्लॉज में कंजंक्शन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, एंड इवन यू कैन फाइंड अ प्रेडिकेट इन अ क्लॉज. बट ये सब हमें फ्रेज में नहीं मिलता है, बिकॉज फ्रेज डू नॉट हैव एनी मीनिंग टू इट. वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो है, बट वो मीनिंग शो नहीं करता है. एंड क्लॉज ऑलवेज शो अ मीनिंग. So this was your parts of sentence. Thank you everyone for watching. We will see you in the next class, and please do like, follow and subscribe.